Hello everyone, my name is Aman and I would like to welcome all of you to another lecture of Developmental Psychology brought to you by Psychologic. Today, we will be talking about Kohlberg's theory of moral development. Let us first understand what is moral development or what is morality. So, meet Aditya, a 10-year-old kid who is studying very hard for his exams. When asked about why is he working so hard, he answered, I want to get a new bicycle. You see, people at this age tend to understand good or bad behavior on the principle of reward and punishment. If you ask any other kid who is working hard but does not like to study, would answer that he is studying because he do not want to be scolded by his parents. In one line, the morality is principles concerning the distinction between right and wrong, or what is good behavior and what is a bad behavior. So, in some previous theories, we discussed how do we develop socially or how our personalities are shaped unconsciously. Kohlberg's theory of moral development is like a roadmap that helps us understand how people develop their sense of right and wrong as they grow up. Kohlberg added that development of morality of a person starts as a dependent moral agent and terminates when an individual becomes an independent moral agent. Here, dependent moral agent means that a person is dependent on an external factor such as rules, authority figures or societal norms. Basically, society के हिसाब से क्या सही है और क्या गलत. After that, independent moral agent. It means these people have a personal criteria of what is wrong and what is right. These kind of persons are someone with self-reflective and individualistic approach to moral decision making. इनकी जो भी decisions होती है वो किसी रूल्स या सोसाइटल नॉर्म्स पे बेस्ड नहीं होती, इनके खुद के क्राइटेरियाज होती है. नाउ मूविंग ऑन, Kohlberg also made an interesting conclusion of his research. According to him, most of the people are stuck in between the dependent moral agent and independent moral agent. मतलब वो dependent moral agent को completely outpass करके इंडिपेंडेंट मॉरल एजेंट बन जाए, इसके काफी कम चांसेस होते हैं. इसका मतलब काफी सारे लोग इन दोनों प्रिंसिपल्स के बीच में ही कहीं लाई करते हैं. Our ideas will keep on lying between these two principles until we die, as per him. देखो, कई बार ऐसा भी होता है कि हमें लगता है कि हमने डिसीजन सोलली अपने प्रिंसिपल्स, अपने आइडियोलॉजीज के बेसिस पे लिया है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता. Let's understand this with the help of a story given by Kohlberg, the Heinz dilemma. It is a famous moral scenario often used to assess and illustrate stages of moral development. Heinz 5 is dying from a rare type of cancer, and the only cure is special medicine that a local pharmacist has developed. However, the pharmacist is charging a very high price for the medicine, which Heinz cannot afford. Heinz has tried everything to raise the money, but he still doesn't have enough. Now, he did try to request the pharmacist कि आप ये मेडिसिन मुझे दे दो, जब भी बन पाए, I will definitely pay the full amount. But the pharmacist rejected the idea. Now, Heinz is faced with a moral dilemma. Should he steal the medicine to save his wife's life? आपको क्या लगता है? अब मैं चाहता हूँ कि आप एक पेपर और पेन ले, आपके हिसाब से उसे क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए. वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कीजिए. उसके बाद हम आगे असेस करते हैं कि आप इंडिपेंडेंट मॉरल एजेंट हो या डिपेंडेंट मॉरल एजेंट हो. Kohlberg used this dilemma to study or to understand how people of different ages and stages of moral development would respond. He was particularly interested in the reasoning behind their choices. Here's how the stages of moral development might apply to Heinz's decision. What Kohlberg did is he took a bunch of people of different age groups and asked them the same question, explaining the same scenario. Should Heinz be stealing the drugs? He was more interested in the reason behind the decision of yes, no. The first category he described is pre-conventional morality. Under these, there are two stages. In stage 1, where he asked the question, one common answer he got was Heinz might not consider stealing to avoid punishment. उनके according, Heinz चोरी नहीं करेगा क्योंकि चोरी करने से उसे नहीं देना पड़ेगा. So, in stage 2, when Kohlberg asked this question, one answer he got was Heinz might steal. मतलब yes, he would steal because he then would emerge as a hero to his wife. लोग उसे praise करेंगे, appreciate करेंगे and whatnot. At pre-conventional morality, you see the decision of a person is dependent upon rewards and punishment.
you would be able to relate it to the example of Aditya I've given before in this lecture. So यहाँ पर obviously these are dependent moral agent. क्यों? क्योंकि इनका decision reward या punishment पे depend कर रहा है. Coming on to the second category he described is conventional morality. Here you would see two stages, stage 3 and stage 4. In stage 3, the common answer of the people were yes, he would steal the drugs because if he didn't, people would consider him a coward. Now tell me here, will it be a dependent moral agent or an independent moral agent? You can just pause the video and write the answer whenever I ask this question. Yes, those people comes under dependent moral agent. Why? Because उनके हिसाब से यहाँ पे लोग क्या कहेंगे वो ज़्यादा मैटर करता है instead of उसके लिए actually क्या सही है. Here, he would steal the drugs just to conform to the social opinion. इसको लोग क्या कहेंगे syndrome भी कहता है. In stage 4, people answered that yes, he would steal the drugs because it's a duty of a husband to save his wife. Now what do you think here? Is it a dependent moral agent or independent moral agent? It is a dependent moral agent. Why? Because ये social norms ही तो हैं जो हमें बताते हैं कि as a husband उसकी duty क्या है. Moving on to the post-conventional morality. Here, we'll see another two and the final stages. In the fifth stage, when people were asked, they said yes, because laws are not eternal. They are made for human welfare. Here, government should pay for the medicine or he should steal the drugs. Now tell me, here what do you think? People comes under independent moral agent or dependent moral agent? It's independent moral agent because people here didn't care about what's wrong or what's right. Here, people made their own perspective that what he should do. And why is it important for Heinz to get the medicine? In the sixth, at the final stage, people answered yes, because nothing stands above human life. Why? Here, what do you think? These category of people are independent moral agent or dependent moral agent? Yes, it's independent moral agent. Even here, people formed their own perspective. यहाँ पर भी लोगों ने खुद से ही डिसाइड किया कि ह्यूमन लाइफ से बड़ा कुछ भी नहीं है. यहाँ पर फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट प्रायोरिटी इज फॉर हाइंस टू सेव हिज वाइफ. यहाँ पर इन्होंने किसी सोशल नॉर्म का सहारा नहीं लिया. यहाँ पर इन्होंने किसी आइडियोलॉजी का सहारा नहीं लिया. इन्होंने खुद से ही एक आइडिया फॉर्म किया था जिसपे इनके डिसीजन बेस्ड. सो लेट्स क्विकली समराइज थियरी. अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, एक इंसान की लाइफ एज ए डिपेंडेंट मॉरल एजेंट स्टार्ट होती है और उनकी मॉरल डेवलपमेंट तब तक चलती है जब तक वो इंडिपेंडेंट मॉरल एजेंट ना बन जाए. डिपेंडेंट मॉरल एजेंट मतलब उनके डिसीजंस किसी एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड कर रही है. इंडिपेंडेंट मॉरल एजेंट का मतलब होता है कि उनकी खुद की पर्सनल क्राइटेरिया है, खुद की आइडियोलॉजी है कि क्या सही है और क्या गलत. यहाँ पर उन्होंने हाइंस डिलेमा के बारे में बात किया. ये एक सिनेरियो, एक स्टोरी कह लो. यहाँ पर इन्होंने डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों से एक सिमिलर क्वेश्चन पूछा कि क्या हाइंस को एक पर्टिकुलर ड्रग चोरी करनी चाहिए जो उसकी वाइफ की जान बचाने के लिए बहुत जरूरी है. डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों का डिफरेंट जवाब था. यहाँ पर उनकी रीजनिंग के बेसिस पे ये 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया और ये 3 लेवल्स पे डिवाइड किया. जिस पर उन्होंने कहा कि एक पर्सन या तो प्री कन्वेंशनल लेवल की मोरालिटी पे लाई करता है या कन्वेंशनल लेवल की मोरालिटी पे लाई करता है और फिर पोस्ट कन्वेंशनल लेवल की मोरालिटी पे लाई करता है. और उसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करते हैं कि वो इंडिपेंडेंट मॉरल एजेंट है या डिपेंडेंट मॉरल एजेंट. एक और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि एज सच कोई एज क्राइटेरिया नहीं दिया, बट उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि एज पीपल एज, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हम डिफरेंट लेवल्स पर एंटर करते हैं. He stated that individuals tend to progress through different stages of moral development as they age and gain cognitive maturity. लेकिन यहाँ पर एक और ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जरूरी नहीं कि हर कोई एक इंडिपेंडेंट मॉरल एजेंट बन जाए. क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा. आपकी कल्चर, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, आपकी एक्सपीरियंसेस कैसी थी, इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा. Now let us look into the criticisms of Kohlberg theory of moral development. So as you know that no theory comes without criticisms, and Kohlberg theory played a very important role in development of moral psychology. While the theory has been rightly influential, some aspects of theory has been criticized for a number of reasons. For example, moral reasoning does not equal moral behavior. Kohlberg ने ये तो बताया कि आपकी moral reasoning, moral thinking कैसे काम करती है. But there is a big difference between knowing what we ought to do versus what are our actual actions.
Moral reasoning, therefore, may not lead to moral behavior. It also overemphasizes justice. Critics have pointed out that this theory of moral development overemphasizes the concept of justice when making moral choices. Factors such as compassion, caring, and other interpersonal feelings may play an important part in moral reasoning. जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल पे भी देखा था कि वहाँ पर ज़्यादा एम्फेसाइज दिया गया था जस्टिस पे, उसके लिए क्या सच में सही है, बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि सबकी ऐसी ही थिंकिंग हो। फिर आता है कल्चरल बायस। अब क्योंकि कोलबर्ग ने ये अपनी थियरी दी थी, वी कैन नॉट जस्ट जनरलाइज दिस थियरी टू द होल पॉपुलेशन। आपको बहुत अच्छे से पता है, जब साइकोलॉजी में हम रिसर्च करते हैं तो we never forget to take culture into consideration because culture plays a very important role in the moral behavior or moral development. For example, Eastern collectivist culture may have different moral outlooks that Kohlberg's theory does not take into account. नेक्स्ट इज एज बायस। यहाँ पर क्रिटिक्स का ये कहना था कि स्टार्टिंग के जो 1-2 स्टेजेस थे वहाँ पर ज़्यादातर बच्चे जो थे वो 16 ईयर्स से कम के थे जब कोलबर्ग ने उनसे क्वेश्चन किया, जिनको ऑब्वियसली शादी का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। नाउ हाइंस डिलेमा मे हैव बीन टू एब्स्ट्रैक्ट फॉर दिस चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड, क्योंकि बच्चों को तो समझ में नहीं आता ना व्हाट्स मैरिज। सो यहाँ पर क्रिटिक्स का कहना था कि हो सकता है वो अपने डे टू डे लाइफ में जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं उन्होंने डिसीजन उसके हिसाब से लिया होगा। नेक्स्ट इज जेंडर बायस। नाउ जब कोलबर्ग ने ये थियरी दी थी तो द मेजर पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन दैट कोलबर्ग चोज फॉर द रिसर्च वाज मेल। कोलबर्ग बिलीव्ड दैट women tended to remain at the third level of moral development because they place a stronger emphasis on things such as social relationships and welfare of others. Gender biasness को लेकर यहाँ पर सबसे बड़ी क्रिटिक थी कैरल गिलियन। इस थियरी को हम आगे आने वाले वीडियो पे समझेंगे। To get the complimentary lecture notes, make sure to check the link given in the description. And if you have any doubt, you can mail us at ourpsychlogic@gmail.com. We'll reply to you as soon as possible. Thank you. Stay tuned. Stay happy.